Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IAS. I hope you all are doing really great. Now we are moving forward in our world geography course, guys. This is part number 3. I hope you have seen the part number 1 and part number 2 also. We had started South America. This is the last part of South America. After this part, South America would be on your tips, guys, right? Also, those who are coming new to it and directly coming to this video, I would request them to see the previous part also. Then only you will be in a position to make connection, because my each and every video are connected. From the first video to the last video, you will see some connection, guys, and this connection you will be able to utilize in the prelims also. This is how you are going to remember everything, right, guys? For those who have not subscribed, subscribe the channel, guys. It will give us motivation to do better for you. And how you are liking the course also, just write it down in the comments. I'll see the comments too, in order to see are you connecting with me or not, right? So let us do a quick recap. Before moving ahead, as usual, we will be doing a quick recap of what all we have seen till now. And this recap method will only those students will be able to do, those who have seen the last 2 classes and are studying with me, are wholeheartedly giving their 100%, right? So let us draw roughly a map of this South America. Rough map. I'm not saying you have to be expert in this, but a rough map should be an idea over here, guys. Can you write down all the countries first? I have told you that the trio form, three countries you have to remember. 1, 2, 3. Then 1, 2, 3. Then 1 over here, 2 over here, 3. 1, this is your 2 and this is your 3, and over here this is Brazil. Likewise, we have made it. This country's remembrance will be very easy. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी बार लिख रहा हूँ, and last class included, हमने 10 times तो revise कर ही लिया. I don't think आपको, अगर if you are doing the same thing, if I'm saying that pause the video and do the same, if you are doing it in this way, I'm telling you आपको revision की भी जरूरत नहीं है. आप directly prelims में इसके बाद जा सकते हो, ठीक है? But बशर्ते provided you are doing it, guys, right? Write down the country's name. French Guiana, that is my Suriname, that is my Guyana. Just write the country's name first of all. This is my Venezuela, this is my what, Colombia, this is Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, and Brazil. I hope you are understanding that 2 landlocked countries, Bolivia and Paraguay, Ecuador and Chile are not connecting with Brazil, does not share any border with Brazil. This is how we have seen in part 1, right, guys? In the initial first lecture of this South America. All these nuances you have to remember in the exam. Paraguay and Uruguay are not touching each other, right? Now, what all we have seen. Can you write down pause the video? Can you write down the capitals of there? Can you write down the important cities which we have seen? Can you write down this area which I have mentioned in the last class? What this area is denoted as? What do we call it as? Pantanal area, pantanal, right? Pantanal regions. Let us mark सबसे पहले which we have seen in the last class, the mountain ranges. Can you find out these 2 mountain ranges? And the characteristic feature. If I am saying that South America's highest mountain range, Aconcagua. The spelling I'm not writing because in the last class we have seen it in detail, right? This is just the recap I'm trying to do. This is your Ojos del Salado. What is the advantage? Like, this is the active world largest active volcano, world largest. Over here you will find Misty, Ecuador, Cotopaxi, and Chimborazo. Over here 3 Cerrados. This particular Cordilleras: Eastern Cordillera, Central Cordillera, Western Cordilleras. These are the mountainous regions you will find. Also, we have seen river system. Amazon will emerge from this Peruvian Andes, right? This Andes chain you have seen. And this will emerge from here and go to this particular. So what are you understanding? You can make your own map, guys. Atlas में बहुत सारे areas दिए गए हैं. Confusing, it's completely confusing. Make your own map ultimately. Practice करने के लिए मैंने आपको map और atlas साथ में रखने के लिए बोला है. But ultimately you have to have your own map, right? अपनी atlas आप बना पाओगे इसके बाद. Over here Macapa was the region ending mouth. आपने यहाँ पे देखा. This largest tributary is known as Madeira. Orinoco River, do you know? Let me change the color. Orinoco River. Over here, Magallanes River in Colombia. Can you tell me about this Paraguay and Parana river system? And the mouth is La Plata. Apart from this, we have studied about the lakes. Can you tell me the Lake Titicaca over here? Can you tell me the Lake Pupu? Can you tell me the lake, what, Maracaibo? Over here you will find the Maracaibo Lake. Can you tell me the lake of this Lagos Lake?
or you can like find just see the name of this particular lake which we have seen. These lakes we have also seen, right? These rivers we have seen, these mountainous chains we have seen, that Andes, and these are other mountainous regions. Also you have seen one region which I have told you, like this Pantanal region, recently in news. I have told you that one island was in news. This is a Falkland Island, not Falkland, but guys, Galapagos Island. This is confusing. I'm telling you, Galapagos. Falkland Island was there, and this Chile's island was Easter Island. This whole is your Pacific Ocean. When you will see the connection with this isthmus over here, you will see that okay, Central America and this North America, when we will see it, we will be seeing it very like elaborately. But यहाँ पर आपने क्या देखा था, ये this is your connection of with the Central America. So this is with Colombia only. Then you have also seen कि हमारी इक्वेटर पे जो लाइन जा रही है, just wait guys, this your, कैन यू टेल मी कहाँ से मार्क हो रहा है? ये मैं थोड़ा सा इसको गलत, फ्रेंच गुआना से भी मार्क जा रहा है इक्वेटर, बट इट इज नॉट, फ्रेंच गुआना इज नॉट देयर, राइट? ओनली BCE कंट्री, ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, राइट? इन द एक्चुअल मैप आई विल बी शोइंग यू. फिर हमारा ये आपको पता है कहाँ से जा रहा है, ABC. इन द फर्स्ट क्लास ओनली वी हैव सीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम हेयर, 23.5 degree. I hope you are remembering this also, Tropic of Capricorn. Your this is equator. Do this particular South Asia, this South America completely in the southern hemisphere? No. You can see that 0 degree के ऊपर भी कुछ है, तो northern hemisphere में भी I have a slight part of this. Southern hemisphere में most of the part is there, not completely in southern hemisphere. And you will see that Tropic of Cancer is not passing through South America. जहाँ से पास करेगा हम वहाँ से देखेंगे. I hope you are liking this approach. If you are liking this approach, do mention it, guys. I'll try to improvise and try to give better to you, right? And I'll also understand that you're connecting with me wholeheartedly, right guys? So this is the map till now which we have seen. Now we will add more features in the form of deserts in this particular class, grasslands, some of the straits, 1 2 straits we have to see, and other miscellaneous things which we have to see. We will be seeing it, and then we will be closing this South America once for all. आप भी close कर देना, आपको याद रहेगा. लास्ट में सिर्फ आप ये पर्टिकुलर आपने जो अपने हाथ से मैप बनाया होगा ना, ये आप देखने की कोशिश करना. वर्ल्ड्स हाईएस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं करना. साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट, साउथ अमेरिकाज लॉन्गेस्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं करना. ये कंफ्यूजिंग एरियाज होते हैं, राइट? सो जब आप कनेक्शन में देख रहे होंगे तो यू मस्ट बी कनेक्टिंग विद माय वर्ड्स. जो अभी अभी जिसने डायरेक्टली ये वीडियो देखी होगी वो थोड़ा बहुत कनेक्शन नहीं बना पा रहे होंगे गाइस, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू सी द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. यू विल बी कनेक्टिंग इट 100% then, right? Let us start our topic now, and we will be seeing some of the grasslands now, grasslands of South America. What do you understand by grassland, guys? A simple thing I am asking. Suppose this is one region, this is one region, and this is one region. In this particular region, you are seeing a lot of vegetation, lot of trees, lot of plants over here, a lot of vegetation you are seeing. Now this area, what do you call this area? You will be calling it forested area. One area you are not seeing any vegetation, no vegetation, you will call it as a desertic area or deserts. And somewhere you are seeing, in some areas you are seeing that okay, a few grassland, few vegetation is present, not extensively but few vegetation you will see. So these areas where not vegetation is not densely present over there but sparsely present are known as a grassland. So can you say that when you are moving from this particular forest to deserts, there is one stage which come that is few in number of vegetation, that is the basically grasslands, guys. If I increase the number of vegetation, if the factors are promoting my vegetation, it will soon become a forest. And if my climate is not promoting this vegetation, slowly and slowly it will become desert. So can you say it is an intermediate stage of this vegetation also? So that's why this is my grassland. More you will study it in physical geography, guys. Don't worry about it right now. See it through the world geography point of view only. So grasslands which we have to see. So grasslands are of basically 2 types, guys. आपको ये समझना पड़ेगा, ग्रासलैंड्स 2 टाइप के होंगे. ग्रासलैंड्स कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट में आपने देखोगे तो
ग्रासलैंड के दो टाइप निकलेंगे आपको, वन इज ट्रॉपिकल and another one is temperate. Tropical and temperate means the whole, let me show you this particular part. See this guys, this tropical part आपको पता है क्या होते हैं, ये बहुत ही इजी है. इक्वेटर, इफ यू कैन सी दिस इज इक्वेटर. आपको पता है कंट्री साउथ अमेरिका से कौन सी पास करेंगे. अफ्रीका जब पढ़ेंगे तो अफ्रीका में भी आपको पूरा याद हो जाएगा गाइस, डोंट वरी अबाउट. इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कंट्रीज है, जितना भी एरिया है, वी कॉल इट ट्रॉपिकल एरियाज और ट्रॉपिकल कंट्रीज. ऑब्वियसली टेम्परेचर का फर्क होता है. यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर कंपैरेटिवली हाई रहता है टेम्परेचर रीजन से. Beyond this tropic of Capricorn to tropic of beyond this tropic of Cancer, over here you will find temperate regions. These are your temperate regions. And beyond this 60° you will find polar regions, polar ice packed regions. ठीक है. So automatically the grasslands which you will find within this tropics, tropic of Cancer and tropic of Capricorn, तो आप उन्हें tropical grasslands बोलोगे. Beyond that you will be saying it tropical, temperate grasslands. Easy and simple. Now if I am saying I am looking towards this particular aspect, I am looking to this particular continent, that is my South America. South America में आपको पता है ये इक्वेटर है. इक्वेटर से बियॉन्ड यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो और भी ऊपर है, लेकिन ये वाला एरिया भी ट्रॉपिकल में आएगा. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया भी ट्रॉपिकल में आएगा. एंड बियॉन्ड दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस विल कम इन टेम्परेट रीजन. So in South America, you will find both temperate grasslands also and tropical grasslands also. What my objective is to remember this. जब मैं इनके याद कर लूंगा, मैं अफ्रीका का भी याद करूंगा, एशिया का भी याद करूंगा, यूएसए का भी याद करूंगा, then I'll be in a position to write everything about the grasslands. कि वर्ल्ड में कौन कौन से ग्रासलैंड प्रेजेंट है. ये आप मीन्स के लिए भी हो सकता है. यहीं पर अगर आपको 4 ग्रासलैंड्स के नाम दे दिए जाए एंड उनके सामने कंट्रीज मेंशन कर दी जाए, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी फॉर्म करता है. अंडरस्टैंडिंग? तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग right now we are studying South America, next Africa or North America, then Asia, Europe. In the end everything will be consolidated. I'll be consolidating everything. Grasslands के लिए अलग से मैं आपको पूरा grassland बताऊंगा, river system अलग से पूरा बताऊंगा, mountains सबका combine करके बताऊंगा, right? So be connected with me. If you will be connected with me, write down in the comment so that we can make a connection also, right guys? Because it is also very बोरिंग फॉर मी फॉर वन साइडेड अगर मैं देख रहा हूँ चीजों को, राइट? क्योंकि मेरे सामने एनर्जी नहीं बैठे, राइट? अगर लाइव क्लासेस होती दैट विल बी मच बेटर, राइट? सो प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो टू दैट यू आर कनेक्टेड और नॉट. ठीक है. सो लेट अस मूव अहेड एंड सी द ग्रासलैंड्स गाइस. सी इन दिस पर्टिकुलर मैप गाइस, ओवर हियर यू विल फाइंड, देखो इक्वेटर, ये तो आपको पता चल रहा है, ये आपका इक्वेटर है, ये तो सबको पता है. एंड ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. ओवर हेयर आपका ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर कहीं होगा, बट ये रीजन ट्रॉपिकल उसमें आ रहा है. सो इन वेनेजुएला यू विल फाइंड वन टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स व्हिच विल बी नोन एज, नाम याद रखना, लानोस. लानोस ग्रासलैंड रिलेटेड टू दिस वेनेजुएला रीजन. थोड़ा सा एक्सटेंशन आप इधर भी देखोगे कोलंबिया साइड में, बट डोंट वरी अबाउट दिस. लानोस यू विल रिमेंबर अबव इक्वेटर ओवर हियर इन वेनेजुएला रीजन. In the Brazilian region, you will find some grasslands. These are also temperate grassland in the form of, you will see it in the form of 3 grassland guys over here. One is Caatinga, one is Cerrados, third one is Campos. Caatinga, Cerrados and Campos. Over here in Brazil you will find. यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को मैं क्या बोल रहा था, सेल्वास. ये अलग है, सेल्वास, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. दीज आर द ग्रासलैंड्स, कटिंगास, सेरिडोस, कंपोस. दीज आर माय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. तो सर फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन से? टेम्परेट ग्रासलैंड्स में यू विल सी ओवर हियर इन अर्जेंटीना, कंप्लीटली इन अर्जेंटीना यू विल सी पंपास गाइस, पंपास. दिस इज योर टेम्परेट grassland. Also one grassland you will see which is present in both this tropical also, temperate also. Over here you will find Paraguay and Argentina में. This is Gran Chaco. अब these words are new guys. अब आपको इसमें घबराना नहीं है कि यार ये कैसे 2-3 बार बोलो, किसी का नाम रख दो, कटिंगा, सेरिडोस, कंपोज,
पंपाज, ग्रैंड चाको, 2-3 बार मैं आपको याद करवाऊंगा, 2-3 बार आप खुद से देखना, एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बार बार आप इसको नहीं देख सकते, एक से दो क्वेश्चन आपको टारगेट करना। अगर 5 से 6 घंटे में आपका ये पूरा टारगेट हो जा रहा है तो क्या बुरा है गाइस, राइट? सो डोंट वरी अबाउट इट। ग्रैंड चाको over here, this is also your temperate, particular temperate grasslands. One type of vegetation you will see over here guys in the Chile, one type of vegetation is very famous which is known as mattoral. Word association should be there. आप जब mattoral अचानक से एग्जाम में देखोगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, it mattoral क्या चीज था और क्वेश्चन आता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। See this very easy, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, term Levant often heard in the news correspond to the following regions. 2022 prelims guys latest, यहाँ लेवांट की जगह कभी वो सेल्वास कर सकते हैं, कभी वो साहेल कर सकते हैं, कभी वो मेटोरल वेजिटेशन कहां से फेमस है बोल सकते हैं। लाइक दिस क्वेश्चंस माइट कम, तो आपको ये वर्ड एसोसिएशन ध्यान में होना चाहिए। क्या उन्होंने लेवांट के बारे में पूरी हिस्ट्री पूछी? नहीं। क्या उन्होंने बहुत कुछ पूछा लेवांट के बारे में? नो। ओनली द एसोसिएशन। जब हम यूरोप पढ़ेंगे तो हम लेवांट भी देखते हैं, ऑब्वियसली एवरी टीचर जो भी पढ़ाता होगा, पहले भी पढ़ते होंगे लोग, बुक से भी पढ़ते होंगे, तो लेवांट आता है। वेरी इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन डिसाइड क्या करता है कि ये 100% लोगों को आता होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा ना तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कि जो सबको आ रहा है वो आपको आना चाहिए, उसके लिए आप रेडी रहो, और जो किसी को नहीं आ रहा वहां पर फिर वो थोड़ा बहुत वेरिएशन होती है, राइट? जो सबको आ रहा है वो तो आपको आना ही चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होता है प्रीलिम्स का गाइस, राइट? सो दिस इज योर मेटोरल, राइट? आई हैव टोल्ड यू ग्रैंड चाको, पंपास, कटिंगास, सेरेडोस, कंपोज, लानोस. Now let me show you in the map also. Over here you will see, let me show you in the map, just wait. Can you see this Campos, Caatinga? आपको ऐसे लिखा दिखाई देगा, लेकिन ऐसे आप याद रखना, कैंपोस, कटिंगा, सेरिडोज आर रिलेटेड टू ब्राजीलियन। कोई एग्जैक्ट प्लेस आपको पिन पॉइंट करने के लिए नहीं देगा, तो अपना अननेसेसरी दिमाग नहीं चलाना है यहाँ पे, ठीक है? इंडिया की कोई प्लेस हो तो मैं बोलूंगा भी आप एग्जैक्टली देखो, बट ओवरऑल वर्ल्ड में आपको स्लाइट आइडिया रहना चाहिए। लानोस, कैन यू सी which area is this? Gran Chaco, can you see Gran Chaco? Pampas, can you see? And over here mattoral vegetation in Chile you will get. This much you try to understand about the grasslands guys. Once again grasslands की एक heading डालो। जब आपको ये याद हो जाए ना तब आई से कि एक स्टेप और जाओ और इनका बस एक एक लाइन देखने की कोशिश करो, विकिपीडिया एंड ऑल। बस तब करना है जब पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने एक बार अपने टिप्स पे ले लिया, जितना मैंने पढ़ा लिया उतना आपको याद हो गया, उसके बाद एक स्टेप जाना हो तो जाइएगा इस, अदरवाइज नहीं जाने की जरूरत अगर आपको ऑलरेडी ये चीजें नहीं पता तो, राइट? ग्रासलैंड्स आर फिक्स नाउ। कैन आई से ट्रॉपिकल? कैन आई से टेम्परेट? and we are talking about the grasslands of South America. So over here can I write Llanos? Can I write about Campas, Caatingas, Cerritos? Can I write about temperate में Gran Chaco? Can I write about this particular Pampas? And one famous vegetation that is mattoral vegetation of Chile guys. So question ऐसे आ सकता है, mattoral is famous vegetation of Arabian regions, ऐसे करके क्वेश्चन डिफाइन होंगे, राइट? तो कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट आपके पास होना चाहिए। Now you see one more thing guys, that is the plateaus. Plateaus आप देखो, plateaus you know right, एक उठा हुआ रीजन, राइट? These are plains. Plateaus will be at some height, but these are flat from above. But if I increase their height and I make them a bit pointed, this will become mountains. एग्जैक्टली आप फिजिकल ज्योग्राफी में इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। प्लेट्यूज कुछ होते हैं, कुछ उठे हुए रीजन्स, अपलैंड रीजन्स, राइट? सो प्लेट्यूज आर आल्सो नोन एज हाईलैंड्स। अब कुछ प्लेट्यूज हाईलैंड्स आपको पता होने चाहिए विच आर कंपैरेटिवली हायर देन द प्लेन एरियाज। सो कैन यू सी दिस ब्राउन एरियाज ओवर हियर, लाइक दिस ब्राजीलियन हाईलैंड्स? सो ये ब्राजील, अब नोबडी विल आस्क यू ब्राजीलियन हाईलैंड्स इज प्रेजेंट इन ब्राजील, तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ऑब्वियसली ब्राजीलियन हाईलैंड्स। बट ग्याना हाईलैंड आपका कहां पर है आप ये देखो, ऑब्वियसली इन दीज 3 कंट्रीज, इन ट्रायो जो हमने पढ़ा था उसमें एक प्रेजेंट है गुयाना हाईलैंड। वन मोर आई वांट यू टू टेल दैट ओके, बोलिवियन प्लेट्यू कैन यू सी? ऑटोमेटिकली इट इज इन बेसिकली पेरू एंड बोलिविया रीजन, बट बोलिवियन प्लेट्यू ये भी उठा हुआ रीजन है। वन मोर प्लेट्यू यू विल सी, पेंटागोनिया प्लेट्यू, दैट मीन्स the above raised plateau over here, Patagonia you will find. So 1 2 3 4 plateaus you are seeing. Let me show you again in the particular
ब्लैंक उसमें मेरे को दिखाने दो आपको। ऑल्सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लेट्यूज डिफरेंस गाइस। सपोज आई हैव one type of situation. These are my mountains. These are my mountains. And over here, you will see one upraised platform of plateau, which is surrounded by mountains. What do we call this type of plateaus? These will be known as intermontane plateau. Means this is surrounded by the mountains. And what are the mountain range which is present in this particular part of South America? Over here, you know, Andes is present. Over here in this particular part, the example of this intermontane plateau is Bolivian plateau, guys. जो अभी हमने देखा Bolivian plateau. So it is the example of intermontane plateau which is present in this particular Andes range. Also, next plateau you will see that, okay, over here if I am saying this is the mountain and this is the plateau over here. This is your surface, this is your mountain, Andes mountain, and plateau over here just next to this particular just next to this particular mountain range, plateau is there. And after this you will see some sea connection. Directly nothing will come, like sea or ocean you will see. So what this type of plateau is known as, this type of plateau is known as Piedmont. आपने पढ़ा होगा Piedmont. Piedmont means the foothills, the plateaus which are present in the foothills of mountains. So mountains का foothills ये हुआ, and this is the plateau which is present upraised platform. This is known as Piedmont plateau. The example of Piedmont plateau you will see as Patagonia. Let me show you now in the map. Can you see this, guys? This is your Andes mountain ranges. And over here you will see plateau. And after that you will see the connection with ocean. So that means this is becoming the feature of Piedmont plateau. So this is the example of Piedmont plateau. Now this Bolivian plateau you will see it is surrounded by hills. This is the example of intermontane plateau. This Brazilian highlands is different, like continental plateau you can say, but it is not the example of Piedmont or intermontane, right? This Guyana highlands over here you will see. So four type of plateaus you have seen, guys, right? So this you can ask, like Guyana you can remember, Patagonia you can remember, Brazilian से आपको याद आ जाएगा ब्राजील से रिलेटेड है, बोलिविया से आपको याद आ जाएगा बोलिविया से रिलेटेड है, तो ये कभी पूछा भी नहीं जाएगा, राइट? अभी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, प्रॉब्लम जब आएगी जब मैं पूरे कॉन्टिनेंट्स को इकट्ठा करके आपको प्लेट्यूज रीजन, एबिसिनियन प्लेट्यू, अदर प्लेट्यूज आपको जब बताऊंगा तब कंफ्यूजन आएगा, राइट? तो अभी क्या, अभी इसको यहाँ पर साउथ अमेरिका के लिए वी विल फिक्स इट आउट. नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस द डेजर्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, डेजर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ दिस साउथ अमेरिका. सो मैंने आपको पेंटागोनिया रीजन बताया, राइट? आप पेंटागोनिया रीजन को ध्यान रखिए अब एक बार. Now you know, okay, this particular area which you were seeing, that if I have a mountain, suppose this is my Andes mountain, and you know that in this particular region westerlies are flowing like this, and when westerlies will come or hit like this you will see westerlies. Obviously it will rise, and over here this is my rain bearing region. In physical geography you understand all this information, guys, right? And after this you will see this a rain shadow region. That means यहाँ पर rainfall नहीं होगा, deficiency of rainfall, right? So over this region you will say that there will be features of deficit rainfall you will see, and sometimes it will be so deficit that it will become a desert. So Patagonia desert is because of this region only, because it is present in the rain shadow region. So let me show you this Patagonia, this particular region, guys, over here, Patagonia desert. So Patagonia is a desert also because of it is present in the rain shadow region. क्योंकि यहाँ पर आप एंडीज माउंटेन्स देख रहे हैं, यहाँ पर रेन बेयरिंग विंड्स तो आएंगी लेकिन वो रेनफॉल यहीं इन कोस्टल एरियाज में कर देंगी, उसके आगे रेन शेडो रीजन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो इसी रेनफॉल को आप फिजिकल ज्योग्राफी में ओरोग्राफिक रेनफॉल के उससे भी पढ़ते हो, जो माउंटेन्स के इस तरफ हो रही है, इस तरफ रेन शेडो रीजन है, तो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया. ऑल्सो यू रिमेंबर पेंटागोनिया फ्रॉम द प्लेट्यू रीजन, दैट इज द पीडमंट प्लेट्यू, राइट गाइस? अपार्ट फ्रॉम दिस Patagonia, you have one more desert, that world's driest desert is your Atacama desert, present in Chile, guys, over here. Why? Because this is because of the cold current. जब आप देखो हर चीज कनेक्टेड है, when I'm saying the whole geography is connected, when you will study the current ocean currents topic, you will understand all the ocean current. तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज विल बी हेल्पफुल. जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तब आपको हेल्प करेगा बहुत, क्योंकि यहाँ पर आप करंट की नॉलेज पढ़ोगे, करंट which are the current flowing from here. तो आप ये देखोगे यहाँ पर cold current are flowing. Two types of current are there, warm current, cold current. तो जब cold current आप यहाँ पर देखोगे तो that will create a condition for dryness.
So that's why you will find the world's driest desert over here. और यहीं पर आपको इसीलिए एरिका भी मिलता है. एरिका world driest place, right? So let me show you like deserts over here. Can you see the Patagonian desert, Argentina? Somewhere it will be touched around Chile also, guys, but not entirely in Chile. You will see entirely in Chile, not entirely in Chile, but some of the part you will see in Peru also, in Bolivia also. यहाँ पर एरिका देखोगे, Atacama desert, Patagonian desert. ट्राई टू रिमेम्बर डेजर्ट की एक लिस्ट बनाकर आप यहाँ पर एक लिस्ट में लिखो A4 साइज शीट में एंड मैपिंग को उसके साथ अटैच करके रखना ये दिस साउथ अमेरिका का, राइट? ये सब आपको भी अब खुद से यू हैव टू इनोवेट थिंग्स कि कैसे आप अल्टीमेटली इन द डी डे एक दिन पहले प्रीलिम्स के 1 घंटे में रिवाइज कर लो पूरा पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी. मैं इस 6 घंटे से आपको 1 घंटे की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कैसे पूरा रिवाइज करेंगे और हम करेंगे भी, राइट? बी विद मी, जस्ट बी विद मी, राइट? ओवर हियर Patagonia, Atacama, I have told you. One more desert you try to understand जो कि आ सकता है ओवर हेयर, यू नो पेरू. दिस इज योर पेरू. पेरू में यहाँ पर छोटा सा इफ आई एम मार्किंग, आप देख पा रहे हो, दिस ओवर हेयर सेचुरा डेजर्ट इज प्रेजेंट, गाइस. नाउ दिस इज ऑप्शनल. इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू कि सेचुरा डेजर्ट, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ रहा है, हर कोई वो 2 डेजर्ट पढ़ रहा है, हर कोई स्टूडेंट. सेचुरा आप 1-2 और एक्स्ट्रा पढ़ो ना, मैं आपको इस वजह से ये बता रहा हूँ. सेचुरा डेजर्ट ओवर हेयर इन पेरू यू विल फाइंड. Over here you will find this Monte Desert. Monte Desert. This particular desert, Monte Desert. This is Patagonia Desert. This is Atacama. This is Sechura. One more you will find over here, which is known as La. Let me tell you. This is La Guajira. Guajira Desert. कहाँ पर है ये आपको? यहाँ पर वेनेजुला एंड कोलंबिया के. दिस इज कोलंबिया, दिस इज वेनेजुला. अब आप कंट्रीज में तो वो होना कंफर्टेबल होना. सो यू जस्ट सी दिस पर्टिकुलर area. This is your Guajira desert. 5 desert you try to understand. 1, 2, 3, 4, 5. Right, guys? So these are your deserts, guys. So let us do this. Deserts has been done, grasslands has been done, lakes has been done. एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे, बट वन मोर थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट ओवर हियर यू विल फाइंड वन स्ट्रेट. आपको स्ट्रेट मतलब पता है? This should be clear, guys. If 2 land masses are joined by a small ocean body, this or a small water body, this is a small water body connecting this land masses, this is known as strait, guys. So आप यहाँ पर एक strait find out करोगे जिसका नाम है Strait of Magellan, guys. Strait of Magellan. Let me show you. See this, guys. Over here, can you see this area of downward area of Chile? But यहाँ पर आपको एक रास्ता मिलेगा. This area, this area, this. This is Strait of Magellan. साउथ अमेरिका में ज्यादा स्टेट्स नहीं है. एशिया में जाओगे आपको 10-15 स्टेट्स याद रखनी पड़ेंगी. आप यूरोप में जाओगे स्टेट्स याद रखनी पड़ेंगी. अल्टीमेटली आपके पास एक 20 to 30 स्टेट्स होंगे. अल्टीमेटली डोंट वरी अबाउट इट. आपको सारी टिप्स पे होंगे, आप ऑटोमेटिकली बता दोगे. ठीक है, हम रिवाइज भी करेंगे उसको. डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट बी विद मी, गाइस. और अपना कॉन्सेंट्रेशन जिस वे में मैं कह रहा हूँ उसी वे में समझो, बिकॉज जो चीज आप देख रहे हो उस रास्ते से आई हैव बीन थ्रू गाइस, राइट? तो आप उस हिसाब से समझने की कोशिश करो, आपका बहुत टाइम रिड्यूस होगा. आई एम टेलिंग यू. So over here, Strait of Magellan you are seeing. Punta Arenas, I have told you, it is present over here, right? Falkland Island somewhere here you will see. I'll show you also this, right? This again you can see this particular part of Magellan Strait. Now let us revise everything what we have studied, guys, right? Let us revise everything. South America is done, right? Let you also try to draw a map, guys. Try to draw the map. Can you draw the political boundaries first? Try. This is Ecuador. This is your Chile. Sorry, this is your Peru, Chile, and this is your Bolivia. This is your Paraguay, and this is your Uruguay, not touching each other. This is your Argentina. This is your Brazil. I am just asking you first of all to write down the capitals. Cayenne, Paramaribo, Georgetown, Caracas, Bogota, Quito, Lima, La Paz, Sucre. Over here you will find Santiago, Buenos Aires, Ascension, Montevideo, Brasilia. Now I want you to write the islands
the islands which you have known over here, Galapagos and ईस्टर आइलैंड एंड वन फॉकलैंड आइलैंड. बहुत सारे आइलैंड्स होंगे, इतना तो आपको टिप्स पे रखना है. देन आई वांट यू टू रिमेंबर द माउंटेन रेंजेस जो मैं मार्क कर रहा हूँ. कैन यू राइट देम? ट्राई टू राइट इट डाउन गाइज. मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू, राइट? ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट्स इफ यू कैन रिमेंबर इट, सो दैट आई कैन ऑल्सो फील दैट पीपल आर कनेक्टेड विद मी, राइट? ओवर हेयर इक्वाडोर में 2, आप दिस वेनेजुएला में यहाँ पर देखोगे, यहाँ से कनेक्शन देखोगे, इस्थमस. मैं बताऊंगा आपको इस्थमस के बारे में भी. यहाँ पर आप स्ट्रेट ऑफ मैगेलन देख रहे हो, राइट? देन यू ट्राई टू गिव मी द डेजर्ट्स ओवर हेयर. Which desert was this? Patagonia. N नहीं है, Patagonia. Over here Monte. Over here Atacama. Over here in Peru Sechura. Over here in this particular Venezuela and this Colombia Guajira or Guajira, La Guajira. 1 2 3 4 5 plateaus, 5 deserts you have known. Plateaus बता दो अब मेरे को आप. Can you mark the plateaus? Over here Brazilian plateau. Over here Intermontane plateau, Bolivia. Over here can you tell me this particular Patagonia plateau? This is a Piedmont plateau. This is the Guiana highlands. Can you tell me now the river system over here? Yes, Paraguay, Parana. La Plata याद आ रहा है आपको? La Plata, Macapa, मडीरा, ओरिनोको, मैगलन और मैगडलन. Now can you remember the basically deserts we have seen? We have seen plateau areas. Can you tell me the grasslands? Caatingas, Cerrados, Campos. Over here Llanos, tropical. Gran Chaco. Can you tell me that particular temperate grassland? Pampas. One more thing you try to understand, guys. I'll be telling you, okay, don't worry. But apart from this, can you tell me about the lakes? Lake Titicaca, Lake Pupo. Over here, I have told you also Lake Maracaibo, somewhere in Venezuela. So lakes we have done, mountains we have done. We have done the rivers also. Have we done the deserts also? Write it down if you know. Just remember, deserts also is being done. Then we have done the plateaus also, important plateaus. One plateau over here you will find Mato Grosso, guys. Mato Grosso, ये हमने मिस किया था, लेकिन आप यह ध्यान रखना. Mato Grosso plateau मैं आपको दिखाऊंगा अभी, don't worry. Mato Grosso plateau is also present in Brazilian areas. Plateaus is being done. Deserts is done. What else is remaining? This is all we want to know, guys, from South America. Countries, we have the idea. We know the tropic of this equator. We know this particular ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. एग्जैक्टली हमने मैप पे देखा है. मैप से अंदाजा लगाना, आप ऐसे मत करना इसको, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है, राइट? कंट्रीज आपको याद रहनी चाहिए कि इक्वेटर से कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्रीज है. क्योटो ऊपर है या नीचे है? साउ पोलो उसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर है या फिर कैप्रिकॉन के ऊपर है? ये भी आपको ध्यान में रखना है. कैप्रिकॉन. स्ट्रेट you have seen, islands you have seen. Try to map, try to draw all these features again on your own and just close it, guys. Then you move forward and I'll meet you in the next class then, right? Just wait, let me show you Mato Grosso. Can you see this Mato Grosso plateau, guys? Mato Grosso plateau. Brazilian you know, Pampas you know, Gran Chaco you know. अब जो भी आप फिजिकल फीचर देख रहे हो वो आपने पढ़ लिया है, गाइस, ट्रस्ट मी. इतना जब आपके हाथ में आ जाए ना, तब आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हो, किसी चीज के बारे में विकिपीडिया में फाइंड आउट करना चाहते हो, कर लो. बट अंडरस्टैंड, मोर देन 5 मिनट्स किसी भी आप टॉपिक को नहीं दोगे. मोर देन 5 मिनट मतलब गुयाना के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के लिए पढ़ो. अगर आपने यहाँ पे 10 मिनट्स दे दिए तो आप कहीं और से अपना टाइम खराब कर रहे हो, गाइस, बिकॉज ये 10 मिनट्स आप कहीं और दे सकते थे, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस वे यू हैव टू प्रायोरिटाइज ऑल्सो. So likewise, we have tried to finish this South America, guys. I hope you will practice it, you will make it in your command, and then we will move to the new continent, guys, right? Do comment if you like it, subscribe the course. I'll meet you in the next session, guys. Keep revising. Take care, guys.